Namaste dosto. Welcome to my YouTube channel called IVD Manufacturing. So today we are going to discuss on a topic called clause number 3, which is terms and definition of ISO 13485. दोस्तों बिफोर यू गोज इन टुडेज लेक्चर मैं आप सभी लोग को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज गो थ्रू माई प्रीवियस 2 लेक्चर विच वॉज ऑन क्लॉज नंबर 1 स्कोप, क्लॉज नंबर 2 नॉर्मेटिव रेफरेंसेस. अगर आप वो 2 लेक्चर के क्लॉज में जब जाएंगे तो आपको इजी हो जाएगा समझने में, जिसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रहा हूं. सो बिफोर आई स्टार्ट टुडेज लेक्चर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज whenever you watch my video, do like, comment and share my channel in your network so that my channel can grow as we progress ahead. So दोस्तों let's start today's lecture. So clause number 3 के अंदर there are various terms and definition have been provided which will make you easier to understand this standard which is ISO 13485-2016. So definition number 3.1 which is advisory notice. So दोस्तों ये advisory notice होता क्या है? As the word suggests, it means a notice is given in a form of advisory. It means it is advising something. So now let's go through the word by word. So it is a notice issued by the organization. When I say organization, it could be you as one of the manufacturer. Subsequent to delivery of a medical device to provide supplementary information or to advise on action to be taken in the. So there are 4 possible conditions where you need to issue this advisory notice to your customers. Okay. सो क्या होता है, ये जो नोटिस होता है ये तब इशू होता है जब आप अपना जो प्रोडक्ट है, जो मेडिकल डिवाइस है, वो ऑलरेडी मार्केट पे प्लेस हो चुका है, राइट. सो वो जो मेरा मेडिकल डिवाइस है जो मार्केट में जो प्लेस है उसके अंदर एक तो आईएफयू होगा, इंस्ट्रक्शन फॉर यूज, विच प्रोवाइड्स द इंस्ट्रक्शन एज टू हाउ टू यूज अ प्रोडक्ट. तो क्या होता है कि अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया मार्केट में, अगर मैं अपने प्रोसेस में like if I want to do any kind of changes or minor changes to make that product easier to operate, तो मैं क्या करूँगा, like for example उस IFE में तो वो changes तो रहेगा नहीं, तो मैं क्या करूँगा, मैं advisory notice issue करूँगा जिसके अंदर मैं वो changes propose करूँगा, okay, and वो changes मैं customer को circulate करूँगा. सबसे पहले जानते हैं कि वो 4 conditions क्या है. First, use of a medical device. When I say use of a medical device, it means कि आपने ऑपरेशन मैनुअल में कुछ माइनर चेंजेस किया जो आप कस्टमर को कन्वे करना चाहते हैं इन अ फॉर्म ऑफ नोटिस. सेकंड, मॉडिफिकेशन ऑफ अ मेडिकल डिवाइसेस. सो लेट्स से आपका कोई प्रोडक्ट है मेडिकल डिवाइस, लेट्स से इट्स सूचर्स. तो क्या हुआ था, आप सूचर किसी कस्टमर को सप्लाई कर रहे थे, ओके, इन अ पर्टिकुलर मार्केट टेरिटरी. तो उसका एक ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा, समथिंग हाउ टू फिक्स इट, राइट. अब क्या हुआ, आपने अपने प्रोडक्शन प्रोसेसेस में कुछ ऐसा कुछ चेंजेस किया है कि आपका मेडिकल डिवाइस मॉडिफाई हो गया है, लाइक इट हैज गॉन अंडर डिजाइन चेंजेस. उस केस में आपको क्या करना है, बिफोर यू गिव अ रिवाइज वर्जन ऑफ योर प्रोडक्ट टू द कस्टमर, आपको एक नोटिस पहले से इशू करना है कस्टमर को, ताकि वो कस्टमर उस नोटिस को पहले पढ़ ले बिफोर ही गोज विथ यूजिंग द अमेंडमेंट प्रोडक्ट. सो दिस वे इट विल बिकम ईजियर फॉर द लाइफ ऑफ द कस्टमर. थर्ड कंडीशन, which is return of the medical devices to the organization that was supplied it. So दोस्तों क्या होता है, कभी कभी आपने देखा है कि जब मैं प्रोडक्ट जब मैं मार्केट में प्लेस कर देता हूँ तो ड्यू टू सम टेक्निकलिटी इशू और द फंक्शनैलिटी इफ इज नॉट एबल टू मीट द इंटेंडेड यूज, तो जो कंपनी होती है, जो मैन्युफैक्चरर होती हैं, वो उस प्रोडक्ट को रिकॉल करती हैं. तो उस केसेस में भी ऑर्गेनाइजेशन को या उस मैन्युफैक्चरर को एडवाइजरी नोटिस इशू करना है अपने कस्टमर्स को. फोर्थ कंडीशन, इट इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस. सेम माय फ्रेंड्स, ड्यू टू एनी एडवर्स इवेंट, अगर आपका जो प्रोडक्ट है जो मार्केट में ऑलरेडी प्लेस्ड है, कुछ एडवर्स इवेंट हुआ लाइक अ डेथ ऑफ अ पेशेंट,
तो आपको इमीडिएटली क्या करना है, आपको एडवाइजरी नोटिस इशू करना है टू अ क्लाइंट और टू द कस्टमर, और आपको इंस्ट्रक्शन ये देना है कि प्लीज डिस्कार्ड दैट मेडिकल डिवाइस इमीडिएटली, इट इज नॉट सपोज टू बी यूज्ड. ओके, सो दिस वाज 4 of the condition for issuing the advisory notice to your customers. सो दोस्तों अब आप देख रहे होंगे वहाँ पे एक नोट 1 लिखा हुआ है, नोट 1 to entry. Issuance of an advisory notice can be required to comply with the applicable regulatory requirements. तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि ये जो स्टैंडर्ड है ना, ये आपको अथॉरिटी नहीं दे रहा है कि आप जब मन चाहे तब आपने नोटिस इशू कर दिया अपने कस्टमर्स को. मतलब ये आपको वेपन नहीं प्रोवाइड करा है कि आप कुछ भी चेंज करो अपने प्रोडक्ट में और जैसा चाहे वैसा कस्टमर्स को कन्वे करो, अपना प्रोडक्ट को मार्केट में प्लेस करो. नो, यहाँ पे क्या हुआ है कि जो गवर्नमेंट ऑफ जो इंडिया है, लाइक दिस स्टैंडर्ड आई एम गोइंग टू यूज फॉर माई ऑन इंडिया टेरिटरी. सो जो सीडीसीओ है, सीडीसीओ की भी कुछ गाइडलाइंस है एज पर MDR 2017, राइट. उस गाइडलाइन में भी हमने एडवाइजरी नोटिस का कोड किया हुआ है. तो अगर कोई एडवर्स इवेंट है तो आपको नोटिस के साथ साथ आपको पहले परमिशन लेना है बाय सीडीसीओ, और यू नीड टू कीप एन इंटीमेशन टू सीडीसीओ फॉर दैट एक्शन, राइट. So I hope this definition 3.1 is clear, which is advisory notice. Now let's go to the definition 3.2, which is authorized representative. So what do we mean by authorized representative? Natural or legal person established within a country or a jurisdiction who has received a written mandate from the manufacturer to act on his behalf for a specified task with regards to later obligation under the country or jurisdiction legislation. So दोस्तों, when I say authorized representative, let's say I will give you one of the example. So क्या होता है, whenever you want to get the CE certification, let's say your manufacturer is set up into the Indian market. Now you want to get the CE of your one of the product which is placed in the European market, which is a mandatory requirements, a legal requirements to get the CE before you place your product into the European territory. So what I need to do, since I don't have my entity or a subsidiary unit in the European, I'm going to appoint one of the authorized representative on behalf of myself who is going to act on my behalf to get the CE marking, right? So this is you mean by the authorized representative. Now let's go to the point 3.3, which is clause 3.3, which is a clinical evaluation. So दोस्तों, what do we mean by clinical evaluation? Assessment and analysis of a clinical data pertaining to a medical device to verify the clinical safety and performance of the device when used as intended by the manufacturer. सो दोस्तों, क्लिनिकल एवल्यूशन क्या होता है? तो क्या होता है, आपका जो मेडिकल डिवाइस है, इट इज गोइंग टू बी यूज फॉर द क्लिनिकल पर्पस, क्लिनिकल इंडिकेशन, राइट. तो वो डिवाइस जब भी मैं यूज करूंगा किसी इंटेंडेड यूज के पर्पस है, डेफिनेटली दैट डिवाइस विल बी अप्लाइज ऑन दी पेशेंट. तो मुझे ये देखना है कि वो डिवाइस कहीं मेरे पेशेंट के सेफ्टी पे इम्पैक्ट तो नहीं कर रहा है, लाइक इट इज फ्री, लाइक इट इज गोइंग टू प्रोवाइड अ सेफ्टी टू माई एंड यूजर, as well as it is going to give the claim result as what is claimed the IF in terms of the performance aspect, right? Now let's go to the clause number 3.4, which is complain. So दोस्तों, आपको complain का तो मतलब पता है. Complaint could be either in form of written or an electronic or the oral communication that points towards the following aspect: either the identity or the quality issue or the durability issue, reliability, usability, safety or performance of a medical devices that have already been placed into the market, right? So this is what you mean by the complaint. So दोस्तों, मैं क्या करूँगा, मैं उस डेफिनेशन पे डिस्कस नहीं करूँगा जो डेफिनेशन काफ़ी सिंपल है और इजी टू अंडरस्टैंड है जब आप वर्ड बाय वर्ड जाएंगे स्टैंडर्ड्स में. आई एम गोइंग टू टॉक और आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ओनली दैट डेफिनेशन विच इज क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड. Clause number 3.5, which is distributor. This is one of the sub clauses. So distributor तो आपको पता ही है, like it is a natural or legal person in your supply chain basically, who or on his own behalf will ensure the availability of medical device to your end user,
So this is very simple to understand. There could be more than one distributor in the supply chain, right? Or a distributor can also involve in the activities such as storage and transport on behalf of the manufacturer or the importer or the distributor, right? This is clear. Subclause 3.6, which is implantable medical devices. So my friends, you already mean by implantable medical devices a devices which is placed in vivo, like within the body, and these devices can only be removed by a medical or surgical intervention which is intended to be totally or partially introduced in a human body or a natural orifice, like your plates. Like whenever there is a fracture on the bone, you are going to fix the plates. There are various plates available based on the bone fractures. Or to replace an epithelial surface or the surface of the eye, right? Or remain after the procedure for at least 30 days. So these are the condition where the definition of the implantable medical device applies. Now let's talk about the 3.7, which is importer. So what is importer? So it is one of the legal person in the supply chain who is the first person to take that medical devices from a particular country where it has been manufactured as per the local NRA, which is National Regulatory Authority, and that devices is going to be carried into some other country jurisdiction where it need to be marketed or manufactured. So I hope this is clear, the meaning of importer. So this importer can be linked with the import license. Labeling. So the very most important definition is the labeling. So what do you mean by labeling? You label certain thing. I mean, there is a label which you paste on your medical device product, on the secondary carton or tertiary carton, and you convey a certain information which helps in easy identification of the particular medical devices. Okay. So let's say, what are the different aspect of the labeling? IFE could be the one of the label. Your boxes or your artwork containing the information of product is one of the label, right? Tertiary shipper box containing information of a shipping address is one of the labels. So these are all the labeling part. Now let's go to the life cycle. So when I say life cycle of a medical device, it means right from designing, development, or right from commissioning till decommissioning is life cycle of a medical device, which is mean as a from the initial conception to the final decommissioning and the disposable, my friends. So this is life commissioning or the life cycle. What do you mean manufacturer? So you know the meaning of manufacturer. I am not going to go through this definition in detail. But a manufacturer doesn't mean that that particular company needs to pass through each stages of the life cycle of a medical device. Let's say अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, डेवलपमेंट कर रहा हूँ, राइट, प्रोडक्शन कर रहा हूँ, स्टोरेज कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई मैन्युफैक्चर को सब कुछ स्टेजेस को पास करना है, अगर इनमें से कोई भी एक दो स्टेजेस फॉलो हो रहा है, ओके, ही इज ऑल्सो कैन बी कॉल्ड एज अ मैन्युफैक्चरर, राइट. सो आई होप दिस इज क्लियर. Now let's go through the definition of medical devices. So my friends, medical devices is a broad terminology. It is either the instrument or the apparatus or the implement, machine, appliance, implant or reagent for the in vitro use, or the software material or other any related material which is intended by the manufacturer to be used against certain diseases. It is a medical devices. So basically medical devices helps in the diagnosis, prevention, monitoring, treatment or elevation of a diseases. Either it can also help in the diagnosis, monitoring, treatment, elevation or compensation for an injury. So I hope this is clear. So I'm not going to go in this all definitions, right? So now let's go to the other definition, which is a medical device family. So a group of medical devices. So my friends, what happened? Let's say I am the manufacturer, okay, and I do manufacture a particular rapid test. So let's say this rapid test
belongs to a same class of medical device पर the medical device classification MDR 2017. तो अगर class B में अगर मैं let's say if there are several rapid product which falls under class B, I can put it under class B as a part of medical device family with respect to based on the intended use or the performance aspect. What do you mean by P? It's very simple to understand. Assessment and analysis of data to establish or verify the ability of an in vitro diagnostic medical device to achieve its intended use. You know the PMS. PMS is nothing but basically the collecting the field data once you place your product into the market, right? So this is PMS. You know the meaning of a product could be like in form of either services, software, hardware or process material, right? Purchase product is simple to understand, like a product which is provided by a party outside your organization QMS system. This is a purchase product. Let's say I am procuring a raw material from the vendor. That is one of the purchase product which is going to help me in making my own product as per X design. You know the meaning of risk, right? Combination of probability of occurrence of harm and severity of that harm. So I'm not going to discuss about the risk. Risk management you already know. Sterile barrier system, like this is pertaining to the medical devices for which this sterility testing is required, right? So how to ensure that medical device sterility still continue or remain the same as the user uses that product. So that is called a barrier system, right? And the last definition is sterile medical devices. A medical device is intended to meet the requirement for the sterility. Though दोस्तों मैंने आज का लेक्चर काफ़ी फास्ट बोला, बट आई डोंट वांटेड टू लाइक गिव यू अ बोर लेक्चर जिसमें काफ़ी इजी था, काफ़ी डेफिनेशन. तो मैंने सारे डेफिनेशन मेरा डेप्थ में मैं गया नहीं. So I hope you must have enjoyed my today's lecture. Please do like my video, comment on my video and share my video in your network and help my channel in growing as we progress and spread the knowledge across both the ends. Thank you. Take care. Bye bye.